The volatile events in Pakistan over the last year have been an upheaval in themselves. A political crisis morphed into an economic one that was then reinforced by a climate and security crisis. At this moment, Pakistan remains ensnared in a polycrisis, while recent political and economic events resemble the initial stages of a system entering a lethal tailspin. Humans have a tendency to ascribe uniqueness to the crises they face, but history is replete with examples of nations facing and overcoming huge upheavals. Are we on the road to perdition, or is there a way out? Jared Diamond, author of Guns, Germs and Steel, details how 7 different countries overcame national crises in his latest book Upheaval. Diamond offers a novel idea in which he argues that strategies that are employed to deal with various personal crises can also be used to overcome national crises. The problematic nature of using individual-level variables to explain macro, national, and complex phenomena notwithstanding, the book carries instructive value on the nature, path, and duration of crises. Diamond's chosen cases include Indonesia and Chile. What happened in Indonesia and Chile should serve as a warning to Pakistan, as both countries ended up with brutal dictatorships after hounding out a single, arguably the most popular, political party. Pakistan must come to grips with the present polycrisis, as the upheaval now seems to be entering a violent phase. In the case of Indonesia, under pressure from a foreign power, the military carried out a massive anti-communist purge, killing over 1 million people, according to some estimates. Such intense brutality, brilliantly captured in the documentary, The Act of Killing, also served as a launching pad for the 3-decade authoritarian rule of Gen Suharto. In Chile, political polarization and economic crisis in the wake of Salvador Allende's socialist policies provided an opportunity for Gen Pinochet to stage a violent military coup. The much-touted economic stabilization under the Pinochet regime came at the expense of massive human rights violations that still figure extensively in the Chilean imagination. President Gabriel Boric Font of Chile recently vowed to keep looking for 1,200 victims of the Pinochet regime whose remains are yet to be found. In a sense, what these case studies point out is that we are taught to think of our societies as linear systems, meaning that societies experiencing volatility, political or economic, can be brought under control. All we have to do is to identify the culprits and introduce disincentives. But, as Indonesia and Chile show, oftentimes political and economic crises take on a momentum of their own. In the final analysis, the issue of who was responsible for unleashing a crisis becomes irrelevant. In reality, societies undergoing crises operate like complex systems in which multiple feedback loops snowball towards a complete system implosion. What this shows is that the Pakistani state and society must come to grips with the present polycrisis, especially as this upheaval now seems to be entering a violent phase. But, to turn back from this road to perdition, the political leadership will have to sit across the table from each other and agree on the future rules of engagement. Without a credible commitment to play by the rules, elections will only generate more chaos. Perhaps, the following recommendations can serve as a starting point for ensuring a smooth functioning of the political system during and after national elections. In parliamentary systems, there is an expectation that the speaker will rise above partisan affiliation in order to conduct the business of the House in an impartial manner. However, events from last year show the need for neutrality for the Speaker's office for all legislatures so that other branches of government do not feel the need to intervene in order to remove the gridlock. Perhaps, an innovative way to provide credible neutrality for the Speaker is to require mutual consultation between the Treasury and opposition, just as it is required for the selection of the caretaker Prime Minister. In the last 1 year, soaring inflation and poverty have made the lives of millions of Pakistanis very tough. Where some of these economic problems originated after the Russia-Ukraine conflict, political uncertainty, more than anything else, is the main driver of this economic crisis, either because governments lost focus or were scared to take bold decisions given the steep political costs. This has not only damaged Pakistan's international credibility but has also brought its economy dangerously close to the precipice.
One way in which the economy can be insulated from future political upheavals is through developing an apex council of economic advisors that not only contains specialists, but also enjoys constitutional protection of tenure. In the medium term, Pakistani politicians can also look at the example of Nepal that decided to introduce proportional representation in its electoral system in order to improve democratic representation. Where 60% of the members are elected in single-member constituencies in first-past-the-post voting, 40% of the members are elected through the proportional electoral system, where people vote for political parties taking the entire country as a single constituency. Such an electoral arrangement holds the promise of encouraging some politicians to rise above parochial concerns and play at the national level. Against the backdrop of what eventually came to pass in Indonesia and Chile, the future appears bleak. Pakistan's present polycrisis is not showing any signs of blowing over. There is still time, however, to learn from this upheaval and chart a democratic path forward. One hopes that the political leadership is going to sit down and talk to each other in order to agree on the rules of engagement. But, turning back from this road to perdition is going to be in the hands of Pakistan's politicians. The writer completed his doctorate in economics on a Fulbright scholarship. Published in Dawn, April 6, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले गैर मुस्तहकम वाक़यात अपने आप में एक हलचल का बाइस रहे हैं। एक सियासी बहरान एक माशी बहरान में बदल गया, जिसे फिर आबो हुआ और सलामती के बहरान ने तक़वियत बख्शी। इस वक्त पाकिस्तान एक कसीर अलजिहती बहरान में फंसा हुआ है, जबकि हालिया सियासी और माशी वाक़यात एक ऐसे निज़ाम के इब्तिदाई मराहिल से मिलते जुलते हैं जो एक मुहलिक पस मंज़र में दाखिल हो रहा है। इंसानों में इन बहरानों को इनफरादियत करार देने का रुझान पाया जाता है जिनका वो सामना करते हैं, लेकिन तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जिनमें कौमों को बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी का सामना करना पड़ता है और उन पर काबू पाया जाता है। क्या हम तबाही की राह पर गामजन हैं या इससे निकलने का कोई रास्ता है? गन्स, जरासीम और स्टील के मुसन्निफ जेरेड डायमंड ने अपनी ताज़ा तरीन किताब उथल पथल में बताया है कि किस तरह 7 मुख्तलिफ ममालिक ने कौमी बहरानों पर काबू पाया। डायमंड एक नया ख्याल पेश करता है जिसमें वो दलील देता है कि मुख्तलिफ ज़ाती बहरानों से निमटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमली को कौमी बहरानों पर काबू पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिक्रो, कौमी और पेचीदा मुज़ाहिर की वजाहत के लिए इनफरादी सतह के मुतग़य्यरात को इस्तेमाल करने की मुश्किल नौयत के बावजूद ये किताब बहरानों की नौयत, रास्ते और मुद्दत के बारे में सबक आमोज़ अहमियत रखती है। डायमंड के मुंतखब करदा केसेस में इंडोनेशिया और चिली शामिल हैं। इंडोनेशिया और चिली में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक इंतबा के तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक ने एक ही मकबूल तरीन सियासी जमात को निशाना बनाने के बाद ज़ालिमाना आमरियतों का खात्मा किया। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान की ज़द में आना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह बहरान अब पुरतशद्दुद मरहले में दाखिल हो रहा है। इंडोनेशिया के मामले में एक गैर मुल्की ताकत के दबाव में फौज ने बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट मुखालिफ कार्रवाई की। कुछ अंदाजों के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा अफराद को हलाक किया। इस तरह की शदीद बर्बरियत को दस्तावेजी फिल्म दी एक्ट ऑफ कलन में शानदार अंदाज में पेश किया गया है, जिसने जनरल सहारतों की 3 दहाइयों पर मुहित आमिराना हुकूमत के लॉन्चिंग पैड के तौर पर भी काम किया। चिली में सल्वाडोर इलंडे की सोशलिस्ट पॉलिसियों के नतीजे में सियासी पोलराइजेशन और माशी बहरान ने जनरल पेनोशेट को पुरतशद्दुद फौजी बगावत करने का मौका फराहम किया। पेनोशेट हुकूमत के तहत माशी इस्तेहकाम बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की कीमत पर आया, जो अब भी चिली के तस्वुर में बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। चिली के सदर गैब्रिएल बोरिक फोंट ने हाल ही में इस अज़्म का इजहार किया था कि वो पेनोशेट हुकूमत के 1200 मुतासरीन की तलाश जारी रखेंगे, जिनकी बाकियात अभी तक नहीं मिली है। एक लिहाज से इन केस स्टडीज से पता चलता है कि हमें अपने मुआशरों को लकीरी निज़ाम के तौर पर सोचना सिखाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि सियासी या माशी अदम इस्तेहकाम का सामना करने वाले मुआशरों को काबू में लाया जा सकता है।
हमें सिर्फ मुजरिमों की निशानदेही करना है और अदम तरगीबात मुतारफ कराना है। लेकिन जैसा कि इंडोनेशिया और चिली जाहिर करते हैं, अक्सर औकात सियासी और माशी बहरान अपनी रफ्तार इख्तियार कर लेते हैं। हतमी तज्जिये में यह मसला गैर मुताल्लिका हो जाता है कि बहरान पैदा करने का जिम्मेदार कौन था। दर हकीकत बहरानों से गुजरने वाले मुआशरे पेचीदा निज़ामों की तरह काम करते हैं, जिसमें मुताद्दिद फीडबैक एक मुकम्मल निज़ाम की तरफ इशारा करते हैं। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी रियासत और मुआशरे को मौजूदा कसीर अलजिहती बहरान की जद में आना होगा, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब यह हलचल अब पुरतशद्दुद मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। लेकिन इस रास्ते से वापसी के लिए सियासी क़यादत को एक दूसरे से मेज़ पर बैठना होगा और मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के उसूलों पर इत्तिफ़ाक़ करना होगा। क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक खेलने के काबिल एतमाद अज़्म के बग़ैर इंतख़ाबात सिर्फ मज़ीद अफरातफ़री पैदा करेंगे। शायद मुंदरजा ज़ैल सिफ़ारिशात कौमी इंतख़ाबात के दौरान और बाद में सियासी निज़ाम के हमवार काम को यकीनी बनाने के लिए एक नुक्ता आगाज़ के तौर पर काम कर सकती है। पार्लिमानी निज़ाम में यह तवक्को की जाती है कि स्पीकर ऐवान के कामकाज को गैर जानिबदाराना अंदाज में चलाने के लिए जमाती वाबस्तगी से ऊपर उठेंगे। ताहम गुज़िश्ता साल के वाक़यात से ज़ाहिर होता है कि तमाम मुकन्निना के लिए स्पीकर के दफ्तर के लिए गैर जानिबदारी की ज़रूरत है, ताकि हुकूमत की दीगर शाखों को इस रुकावट को दूर करने के लिए मुदाखलत करने की ज़रूरत महसूस न हो। शायद स्पीकर के लिए काबिल एतमाद गैर जानिबदारी फराहम करने का एक जदीद तरीका यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बाहमी मशावरत की ज़रूरत होती है, जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए ज़रूरी होती है। गुज़िश्ता एक साल में बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत ने लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। जहां इनमें से कुछ माशी मसाइल रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद पैदा हुए, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल किसी भी चीज़ से ज़्यादा इस माशी बहरान का बुनियादी मुहर्रिक है। तो हुकूमतों ने तवज्जो खो दी है या भारी सियासी अखराजात को देखते हुए जुर्रतमंदाना फैसले करने से डरते हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसकी मईशत खतरनाक हद तक तबाही के करीब पहुंच गई है। मईशत को मुस्तकबिल के सियासी उतार चढ़ाव से महफूज रखने का एक तरीका यह है कि एक आला तरीन इक़्तिसादी मुशीरों की काउंसिल तैयार की जाए, जिसमें न सिर्फ माहिरीन शामिल हों, बल्कि मुद्दत मुलाजमत का आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो। दरमियानी मुद्दत में पाकिस्तानी सियासतदान नेपाल की मिसाल भी देख सकते हैं, जिसने जमहूरी नुमाइंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने इंतखाबी निज़ाम में मुतनासिब नुमाइंदगी मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया। जहां 60% अरकान एक रुकन हलकों में मुंतखब होते हैं, वहां 40% अरकान मुतनासिब इंतखाबी निज़ाम के ज़रिए मुंतखब होते हैं, जहां लोग पूरे मुल्क को एक हलके के तौर पर लेकर सियासी जमातों को वोट देते हैं। इस तरह का इंतखाबी इंतज़ाम कुछ सियासतदानों को तंग नज़री से ऊपर उठने और कौमी सतह पर खेलने की तरगीब देने का वादा करता है। इंडोनेशिया और चिली में बिलाखिर जो कुछ हुआ, इसके पस मंज़र में मुस्तक़बिल तारीख दिखाई देता है। पाकिस्तान के मौजूदा बहरान के ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ताहम अब भी वक्त है कि इस हलचल से सबक सीखें और आगे बढ़ने के लिए एक जमहूरी रास्ता तैयार करें। उम्मीद की जा सकती है कि सियासी क़यादत एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेगी, ताकि बातचीत के क़वाइद पर इत्तिफ़ाक़ किया जा सके। लेकिन इस रास्ते से तबाही की तरफ पलटना पाकिस्तान के सियासतदानों के हाथों में है। मुसन्निफ़ ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर मुआशियात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 6 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.